तो ये जो फ्री सेशन में प्रेजेंटेशन शेयर होता है, एक्सेल शीट शेयर नहीं होता है. So in free session we never used to share the Excel sheet. Presentation used to be get shared. Presentation I have given you in this handout section, also in the public group, but we maintain that public Telegram group. So today we are going to learn two very important concepts. It is a token of gratitude towards my students, so those who have associated with smart finance for a long period of time. As a token of gratitude towards them, here for them it is being made. So fine, so we'll first go through how you can make money in calendar spread option strategy. So calendar spread option strategy, many of you will be knowing it. What is a calendar spread option strategy? There are two types of calendar spread option strategy. Type 1 credit calendar, type 2 debit calendar. Credit calendar means while forming the strategy you receive money. Debit calendar means while forming the strategy you are paying the money. So the definition is given here. क्रेडिट कैलेंडर, डेबिट कैलेंडर स्ट्रैटेजी ये होते हैं कि जिसमें स्ट्रैटेजी फॉर्म करने से पैसा मिलता है वो अपफ्रंट, उसको बोलते हैं क्रेडिट कैलेंडर, जिसमें आपको देना पड़ता है डेबिट कैलेंडर. वो स्ट्रैटेजी होता क्या है? व्हाट यूज्ड टू बी क्रेडिट कैलेंडर और डेबिट कैलेंडर? से निफ्टी इज एट 19,300. So this is the Nifty is at 19,300. So all of you will be knowing it is in the month of July. We will be having 3 months contract, July, August and September. So 3 months contract we used to have. 3 months contract. So here 19,300 Nifty is trading. Suppose if you are buying 19,300 call of July and same time you are selling 19,300 call of August, then it is known as credit calendar spread, because you have received the money. August will be trading at a higher premium, so you receive a higher premium, you paid a lower premium, the difference is your gain, or that is the upfront you have received that money. If you do reverse, if you are August buying and July selling, then you are paying something to the market, so that is known as your debit calendar. तो ये हो गया credit calendar, debit calendar, very simple strategy. However, if you try little trickily, if you implement this strategy, little tricky way, if you implement this strategy is going to give you money or profit in consistent month-on-month basis. So what is the process? Process is too simple, very simple process. थोड़ा सा observations, थोड़ा सा जो आपका basic concentrations उतना ही चाहिए. So to make money in this calendar spread option strategy, you require little bit of concentration and little bit of configuration of 60 to 65 point spread, debit calendar in the near strike, credit calendar in the OTM strike, and in such a process the net should be 60 to 65 points in Nifty. If it is Bank Nifty, 110 to 150 point spread. Spread means difference. Okay, so that if you maintain this simple process, if you maintain, then you will get profit. Profit will automatically will come. If this configuration is maintained properly, profit is going to come automatically. Why? There should be some logic.
Why this profit comes? If I take a debit calendar, credit calendar in this format, profit is going to come. Why it should come? What makes the profit to come? Because by this process, your delta used to get neutralized to 0. Delta will become neutralized to 0. So same process, theta will have some values and theta will be a contributor. So we'll see. So here I have given a test report to you from the month of January 2023 till the month of June 23, May 2023. So till that point I have given. So we have a testing tool. So by this process we are doing it. So here what I said, we are Nifty on January 2nd January, because 1st January was a happy new year. So market will be off. So that 2nd January market was there. So in this 2nd January, we found out Nifty is at 18,197. But don't take it as a rule. Little bit, what I said, little bit of concentration, little bit of observation required. These two things as required. What is the concentration and observation? I will tell you. Nifty is at 18,197. So my first one will be a debit calendar, DR. Debit calendar. Debit calendar in 18,200 strike. That to call option only, put option I am not taking at all. Why taking call option? Because future maintaining 100 plus point of premium. Future, Nifty future maintaining a 100 plus point of premium, which is 0.5% above premium. So that is why I am taking. So here many conflicting logics also used to be there. If Nifty is having 100 plus point of premium, what way we are bother? Why we should bother? That is, many people used to say. We have seen lot of books you have studied. Many of you would have studied a lot of books. So you used to say theta is the time value decay of option. Theta of option is negative. Time value decay, this is theta says that time value decay per day. थीटा का मतलब ये होता है हर दिन टाइम वैल्यू कितना गिरेगा, तो वो होता है ऑप्शन का। तो फ्यूचर का थीटा क्या है? तो थ्योरेटिकल किताब में लिख दिए फ्यूचर का थीटा 0 गया, बुक में लिख दिए फ्यूचर थीटा इज इक्वल टू 0। So future theta is equal to 0. You will find out in all books. So what is wrong? Which is wrong? Why it is wrong? If this future maintains 100 point premium in the beginning, towards the end of January or on the day of settlement, this premium will cease to 0. Means there will not be any premium. So where that premium gone? Premium over a process of time, it has disappeared. So there is this premium has a time value. So whatever the premium or discount the future will be having, divided by 30 is the theta of future. That nobody will tell you. All books written future theta 0. Future is a derived copied instrument from the spot. If it is copied instrument, then it should not have any premium or discount. If it is a premium and discount is there, it is a clone instrument. It is not a copied instrument. It is a clone of the underlying asset. So clone, your clone, human clone, animal clone, you have seen. It is clones. It will have similar property and some extra properties. So that is what is a clone. तो ये होता है फ्यूचर का थीटा, प्रीमियम और डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 30, दैट टू आल्सो नेगेटिव। सो अगर नेगेटिव प्रीमियम होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा थीटा। सो फ्यूचर आल्सो हैव ए थीटा। सो ड्यू टू दिस 100 or 150 point of premium in the future, we are using calendar spread technique to exploit that situation and make profit. So what we did,
we have formed a debit calendar at ATM option. So now it is Nifty spot is at 18,197. So nearest 18,200 is ATM, 2 to 3 points from there. We formed a debit calendar. Then we are forming a credit calendar in some OTM option. Some OTM, it may be anything, 500 point, 600 point, 700 point, anything. However, this debit minus this credit should be 60 to 65 points. That is the rule. This much you do, your job is done. See the profit and loss, one lot. See the profit and loss from the 2nd June to 24th June. 2nd January to 24th January. Profit and loss analysis देखो. 18,200 strike you have formed the debit calendar. 18,800 strike you have formed the credit calendar. Why 18,800 strike? Because by this process you are reducing the cost of this debit calendar to 65 point. तो कैसे हुआ देख लेते हैं. 485 आपने परचेज किया, ये समझ में आया. बाई किया एक लॉट, आपने 289 में एक लॉट सेल किया. तो इसका डिफरेंस देखो, 6-7 बचा. फिर से क्या आपने बोरो लाए, 7-17 हुआ. तो 9, यहाँ पे 3 से 2 गया 196 पॉइंट यू हैव पेड फॉर दिस. हमें कितना रिड्यूस करना है, 60 से 65 लाना है. मीन्स वी हैव पेड 196. 485 we bought, 289 we sold, same strike. So by this process we paid 196 points. So by this process again we are going up. So 500-600 points above we are going. So we are here 140 point we are getting back. So almost 140 point. So here 194.52. So almost, if I round it, 194 minus 52. So here by this process 142 point we are getting. So how much we have paid? So 6 to 4, 9 minus 4, 554. We require 60 to 65 point. So we got. To select this credit calendar, there is no rocket science. You have to get a credit in such a way that your debit calendar's liability, whatever debit calendar you have paid, you should recover 100 and in such a way that your spread should be 60 to 65. So here it come to 55. It is good, well and good. So see the profit and loss. Every day basis. Next day went to profit, very next day profit, third day profit, like that. Then we'll go to February. Same style we put. But I have told you one term. You have to do a concentrated way. You have to do it. You have to you should have a concentration and a little bit of thought you have to put into that. Don't say it is name is strategy. So Ranjan ने बोल दिया हर महीने काम करेगा. No. Little bit of thought you have to put into that. So here too also same, 189 point you are debit, you are getting 136. So you have reduced that liabilities. See February में क्या हुआ, February में, so some days loss, then final day it is entering to the profit. So here see the spot price. When we have entered, that time it was 17,610. So after that, market has gone up by 300 points, 600 to 900 or 18,000. We are into the loss. Suddenly on the 21st, 22nd, it has fallen down. 22nd February fallen down. So here also fallen down. So we have received the profit. So thought क्या बोलता है? What is your thought? Say got a profit. February we initiated. We found out market gone up 300-400 point. We did not make any money. It was coming loss. Same logic.
Same logic. Logic was not different. What went wrong in the February? Why we did not make the profit? क्या सोचा? I'm asking why these losses came in the month of February, where January we have never made loss. January we have entered at 18,200. So then market fallen, gone to 18,200 level again. Every day we are making profit. February में क्या हुआ? हम पैसा नहीं बना पाए. Why we did not make money? And last day also we are going to make money. What happened? January there was a stiff correction. January there was a stiff correction. Sorry, January it is a consolidations. Come consolidations, come corrections. And February, once that last few days of January, post January expiry. So there was a correction, toughest correction. So till 24th January it was 18,118. But February 2nd we are entering 17,600, near to 500 point correction. Then there is a slight up move, 300 to 400 point up move. तो जब ये बताता है this strategy, it was a budget. January was a sideways trend. We made money. It was February and March. February was a budget month, and there is a sharp move happened upward. Upward move happened, sharp move happened upward. So we are making some losses. But what happened? Final 2 days of the February, we have again come back to 17,800, 17,500. We made the money, or 17,800. You can say 900. You can say final few days. So whenever there is a consolidation happens, we are making the money. So now we can go for the March. March also same logic. We are putting 17,300. It was there. We formed a debit calendar, then credit calendar. Look at this thing. March also we formed the debit calendar, credit calendar. But what happened? 200 point up to 300 point. It has gone up. Then it is fallen back, consolidated. We have made the money. March also we made. January we made all days. February, most of the days we are negative. March and last 2 days when trend become favorable, we made profit. March, most of the days we made from the mid March, from 13th March onwards, we made the profit. So 13th March onwards, we made the. So March also we made profit. So what logic we are following? We are forming a debit calendar. We are forming a credit calendar. By this process, we are bringing our cost of calendar to be 60 to 65 points. That is the logic. So why we are doing this? By this process, we are neutralizing the delta. Delta we are neutralizing. So once we are initiating this, if the market consolidates or corrects, consolidation come correction happens, we are making the money. March also we made money. First 3-4 days there was a loss. Then after we have started making money because it has consolidated. We entered the strategy at 17,300. Now it has corrected, gone till 16,900, 300 to 400 point move happened. So our average gain 2 to 3,000 rupees we made. One lot. And this also takes a margin hardly 50,000. So this has happened for March. Let us see for April. April we have also formed in the same order. But April में क्या हुआ देखो. So this also slight deviation. 389, 243. So here difference is 6, 4, 1. 146 is the spread. 146 is the spread between the April and May. And out of that, I am taking 30 rupees. If you can less it here, 114. So 113.75 from, and again 29.75. This is credit calendar. So this is debit. So debit calendar. So this is debit, and so 9 3 as a 6,
84 is 4, 146 here debit. So we are making here 0 0. So there is 4 and here 10 to us 84. 84 we are getting as a credit. So difference it. So here 2 6 62 points, much favorable. So we required 62 65. It has favorable. So go back and see what happened. Go back and see here also negative negative. Finally we are landing at negative 5 18,000 17,300 to 17,800. There is a 500 point up move happened. There is no look back. That uptrend did not come back. So ये कैलेंडर स्प्रेड लॉजिक क्या बताता है? ये आपने जनवरी का देखा, फरवरी का देखा, मार्च का देखा, अप्रैल का देखा, मई का भी देखा. सो अप्रैल का देखा. So same process. Month of May also I think I have added here. No, month of May I have not added. I will add it also. May and June added. May and June also I have added. So here also profit coming, loss is coming. So इसमें क्या बताता है? When you are making an entry, इसमें यह देखो लॉजिक, इसलिए मैंने बताया था थोड़ा सा सोच डालो, वंडरफुल ट्रेडर्स बन जाओगे. Little bit of your thinking and little bit of your concentration, that is required to make money in this strategy. रूल तो फिक्स हो गया, 65 का लेना ही है, 65 पॉइंट का ही रखेंगे, 60 से 65 पॉइंट का रखेंगे. विल कीप 60 to 65 पॉइंट स्प्रेड. हमें जहां पे हम एंट्री करते हैं उसमें से अगर 300-400 पॉइंट ऊपर चला जाता है, 300 to 400 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो प्रॉफिट नहीं निकलता. So we are not getting profit or we are landing at loss. If it consolidates there, then we are making profit. Consolidates going down, or if it is going down or consolidates, we are making profit. Consolidates, we are making profit. If there is a sudden up move happens, by this process we are not making profit, rather we are making losses. तो कैसे करें? लॉजिक बनाओ. अभी कंसोलिडेशन कब होगा? तभी अगर एंट्री कर ले तो हो गया. अगर कंसोलिडेशन जब होगा उसी टाइम पे हम एंट्री मार लिए तो हमारा बात बन गया है ना. ऑल ऑफ यू आर एग्री विद दिस? कंसोलिडेशन जब होगा तभी अगर हम एंट्री कर लिए देन हमारा बात बन गया. नंबर 1 फर्स्ट थिंग, अगर कंसोलिडेशन नहीं होके देयर इज ए मूव हैपेंस, उल्टा कर दो वो स्ट्रेटेजी को, डेबिट के जगह में क्रेडिट, क्रेडिट के जगह में डेबिट कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा. वो मूव भी चाहिए. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई 2 सिचुएशंस वेयर will be the whether it will be a consolidation or after how many points there will be a consolidation or after how many points there will be a trending market. ये दोनों चीज आपको जानना है. सो ये लॉजिक बताता है जहां पे हम एंट्री मारे वही एंट्री के पोजीशन से अगर मार्केट गिरा तो बहुत बढ़िया, वहां से ऊपर गया तो हमें प्रॉब्लम. तो यही होता है. This is the thing we got it from this 4 to 5 months. तो अभी अगर हम ये जान ले कि कंसोलिडेशन कैसे होगा, हम कैसे जान पाएंगे, या कौन से मूवमेंट से ही प्राइस करेक्शंस होंगे, अगर वो जान पाएंगे तो हमारा जब हो गया. We have identified that. How to know that? Logic है. So there is a logic to know when the consolidation or after how many price point the consolidation is going to hit. So इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले हमें VIX को देखना पड़ेगा, वोलाटिलिटी इंडेक्स. हम निफ्टी में काम कर रहे हैं, so volatility index we have to see. Say, so here you can say Nifty spot, Nifty VIX historical VIX. So this निफ्टी का हिस्टोरिकल विक्स डाटा देखो. सो
फर्स्ट निफ्टी का हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे, विक्स का, निफ्टी का नहीं, निफ्टी का हम नहीं देखेंगे, हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे। अब किसका? निफ्टी का। तो पहले यहाँ पे देखो, जून और मई मंथ से शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा रेक्टिफाई करके देखेंगे तो कैसे इसमें वन क्वार्टर देख लेते हैं। तो जो 1 month 1 week year till date, so year till date देख लेते हैं, that is good way. So here we got all weeks. So January, June first, क्या मई फर्स्ट में चले जाते हैं। So मई एंड जून में ये हुआ, हम देखें what we have seen here in the month of May and June 18,147 में स्टार्टिंग वहीं पे ही एंट्री कर लेंगे, सोच के हमने कर लिया। ओके, कुछ दिन 15 दिन लॉस में रहे, उसके बाद में प्रॉफिट आ गया, बहुत खुश। हम अभी करेंगे नहीं, इमीडिएटली एंट्री नहीं करेंगे, थोड़ा सा वीक्स को देख के स्टडी करके करेंगे, थोड़ा सा आवर ऑब्जर्वेशंस एंड आवर कंसंट्रेशंस दोनों को काम पे लगाएंगे। ऑब्जर्वेशन थोड़ा करेंगे, थोड़ा कंसंट्रेशंस डालेंगे, तब करेंगे। तो अभी मई का मंथ शुरू हो गया, दैट इज ए स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑफ मई एंड मई सेकेंड। इमीडिएटली हमें एंट्री नहीं करना है, दैट इज नॉट नेसेसरी दैट वी शुड एंटर ऑन द सेकेंड मई। एग्जाम्पल देख लिए वो सभी। सो एग्जाम्पल समझने के लिए, कितने महीने प्रॉफिट आए, कितने महीने लॉस आए, क्यों नहीं आए, वो सब देखने के लिए ठीक हो गया। दैट इज वी केम टू नो हाउ मेनी मंथ्स, जनवरी वी गॉट प्रॉफिट, फरवरी last 2 days we got profit, March we got certain days profit, April we did not get profit, May we got the profit, June we did not get for first 10 days, then we went to profit. All these things we identified. So and through that process also we learned, after we initiate this configuration, this type of strategy, if market consolidates or falls, we are making profit. Market doesn't consolidate, doesn't fall, goes up, then we make loss. So for that, little bit of study we are doing. On the May 2nd, we are getting the VIX as 11.89. VIX कितना है? 11.89. 11.89. This is called the VIX. What is this number? VIX, Volatility Index. And on 2nd May, what is the Nifty? Nifty यहाँ पे आपको दिख रहा है in presentation. So on the 2nd May, what is the Nifty? 18,147. That is the spot Nifty. 18,147. 18,147. 18,147. तो ये VIX बताता क्या है? In this particular month, how many points it will move? That only VIX says. So what we'll do here? Here we'll be taking the 11.89, dividing it by square root of 365. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये yearly terms में है. This is in yearly terms. We have to bring it to daily terms. 0.62. Then we want in the monthly terms, this multiplied with square root of 30, क्योंकि हमें स्ट्रैटेजी करना है 30 दिन के लिए। सो 30, ये बात समझ में आ गया। VIX डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 365, डेली टर्म, डेली VIX, दिस इज डेली VIX, डेली VIX, दिस इज मंथली VIX, मंथली VIX, मंथली VIX हो गया। ये सारे परसेंटेज में है, मीन्स दिस ऑल थ्री आर मल्टीप्लाइड विथ 100। हमें 100 चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? नॉन 100, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, बड़ा नंबर निकल आएगा। तो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव 11.89 परसेंटेज, सो इट इज 0.1189 परसेंटेज। दिस इज मंथली VIX। ये मंथली VIX में निफ्टी को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, कितना आया? 618 पॉइंट, 618 पॉइंट ऑफ मूव होगा। 618 पॉइंट ऑफ मूव इस महीने में पॉसिबल है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, यही बताया। व्हिच डे? ऑन द व्हिच डे इट हैज टोल्ड? May 2nd। May 2nd में ये पता चला कि निफ्टी
600 पॉइंट का 618 पॉइंट का मूवमेंट देगा, मींस निफ्टी विल मूव बाय 600 पॉइंट्स दैट वी गॉट ऑन द डेट ऑफ 2 मई। सो क्या हुआ वो तो देखते हैं। सो इफ दैट हैज हैपेंड देन ये जो मई में बताया भी, सो वेदर इट हैज हैपेंड, सो देखते हैं वो भी देखना चाहिए या नहीं, दैट आल्सो वी नीड टू सी, that also we need to see here whether it has worked or not, worked or not। एक सेकेंड टाइम मुझे दीजिए। So what happened, we have seen the historic data, now we have to give Nifty historic data, we have to see किस महीने का, मई का, मंथ ऑफ मई, सेकेंड टू एंड ऑफ मई। सो मई के महीने में ये थोड़ा, इसमें थोड़ा सा स्टडी हम कर रहे हैं, सो सम लिटिल बिट ऑफ स्टडी वी आर डूइंग to make these things, to make this, refine this study till you can say, so here 2nd May to again May 2nd to 30th May, so 31st अप्लाई। तो देखते हैं मंथ ऑफ मई में कितने पॉइंट का डिफरेंसेस हुए। विक्स तो बताया था हमें, विक्स क्या बताया था, 618 पॉइंट मंथली मूवमेंट होगा, क्या बताया था, गब्बर आएगा। So it has told on the day of first date of second date of May, VIX was 11.89. It said your Nifty is going to move in a band of 618 point। तो कितने पॉइंट का मूव हुआ, देखो हाई ये बना, लो ये बना, 620 पॉइंट का मूव हुआ या नहीं। VIX जो बताया था ऑन द May of second, it has happened or not, happened। तो अभी हमारा काम ये बनता है 620 पॉइंट का मूवमेंट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें तभी लेना है जब ये आपको एक स्पेसिफिक ये 620 पॉइंट का मूवमेंट होगा। तो 620 पॉइंट ऑफ मूवमेंट होगा, हमें आइडेंटिफाई करना है कब कंसोलिडेशन होगा, कब अप मूव होगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन द कंसोलिडेशन विल स्टार्ट and when the up move will start, that we need to find out from 620 points। There is a 620 points of movement is expected, 620 point movement is expected। So here आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो इसको 0.618 फिबोनाची रेशियो में, 382 पॉइंट्स। आप बैठे हो किसमें, 18,147। सो लॉजिक बनाओ यहीं से, ये हर महीने में पैसा देगा। आप इसको लॉजिक बनाओ, टेस्ट करके 1000 दिन का देखो, आप ये गुरु पूर्णिमा का गिफ्ट को याद रखोगे। सो हियर दिस इज द प्राइस पॉइंट वी शुड एंटर, बट इसी से ही हमें एंट्री करना है। सो वी हैव टू एंटर हियर। सो 18,147 and 18,662, ये उस महीने में 620 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, 18,529 जब बनेगा तब हमें क्या करना है, यहां से कंसोलिडेशन होंगे। द कंसोलिडेशन विल स्टार्ट once it touches 18,529 और up move will start after touching 17,764 or consolidation will start at 17,764। अभी कितना है, 18,147। from here if it is rising till 18,530, consolidation will start। from here if it falls to 17,764, consolidation will start। तो उसी टाइम पे हमें लेना है। सो उसी टाइम पे हमें लेना है, ये क्या लेना है, on that time we have to take a credit calendar and a debit calendar and maintain the spread as 65। यही करना है, ये करेंगे तो हर महीना पैसा बनेगा, जब तक ये नहीं आया नहीं करेंगे।
Till we have not achieved that, we will not do. Either it should come to 18,530 or 17,764. तो देखते हैं कब आया 18,560. चलो कभी तो आएगा ये सब क्लोजिंग है. सो मई का एंड तक ही आता है. सो इन बिटवीन ऑल्सो इट हैज कम 560, 360, 460, 560 यहाँ पे आ गया, 500 आ गया, 26 मई को आ गया, 2-3 दिन बचा हुआ है. So here itself you should initiate debit calendar and credit calendar. So this is the essence of your implementation. इसमें हम क्या किए, कोई रूल नहीं, ऐसे अंधाधुन इनिशिएट किए, फिर भी प्रॉफिट आया. अंधाधुन इनिशिएट किए, पहला दिन में इनिशिएट करके बढ़ गए. So what our logic? Debit calendar in the ATM and credit calendar in the OTM, reducing the spread to 65 point. So this we have done. We got January, we got a good profit because fortunately it was a consolidation. February we have initiated, first few days we did not get anything, first 5-10 days, towards last we get, that is also a fortunate factor. Then third month also we went, March month it consolidated and gone down 17,300, then after it has gone down 300-400 point, so we made profit. This is also fortunate month. Then April we have done, April and May. So this month we have not got anything, April and month, every month negative and finally negative. Then we have gone into the May month, May and June. So first till 15th we have not got anything, then after we have started getting, and finally we got the profit. So this has happened with us. No rule. उसको थोड़ा refine करें. So इसमें से ये पता चला, when we have backtested this, we found out after we enter this trade, if market is consolidating like January, we are making profit. If after we initiated this trade, if market is correcting, we are making this profit. तो ये हमें पता चल गया क्या, after we initiate the position, if this particular stock is correcting or index is correcting post that or consolidating, we are making profit or else not. तो हमें, so we need one favorable situation where we should enter so that we should not have this problem at all. So consolidation will happen that time. How we will do it? Take the VIX on the day one. Day one, what is the price? Find out its price range for the entire month, multiplied with 0.618. Add it from the day one price, subtract from day one price. So when it will come to 18,529, you have to initiate. क्योंकि consolidation या correction will start from here. When it comes to 17,764, you have to initiate. So your consolidation and correction will take place there. So उसी टाइम पे प्रॉफिट बनेगा. सो ये हो गया. हाँ, ये समझ में नहीं आता. सो सपोज यू डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस थिंग, नथिंग टू वरी. टेक इन दिस ऑर्डर. After 200-300 point goes up, month started, market gone up by 200 or 300 point. मान लीजिए वो VIX का कैलकुलेशन कुछ समझ में नहीं आता. Nothing you are understanding. From VIX, nothing you are understanding. What you have to do? Blind, हमें calculations में allergy है, कुछ कर नहीं सकते. So what do you have to do? Let the market to open, add 200 point plus or minus plus और 300 point plus हुआ, उसके बाद में लो. 2 दिन के बाद में हुआ, 3 दिन के बाद में हुआ, लो. That also you can do. अगर माइनस हो गया तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि सूरज ही गिर गया तो कुछ कर नहीं सकते. And that too also only call option I am suggesting. Why? We are maintaining, Nifty is maintaining 100 point of premium. That means future is having a theta value. That 100 point multiplied with 55,000 rupees, we want to convert it to profit. वो जो 100 point है प्रीमियम, मंथ एंड तक वो चला जाएगा. वो 100 point प्रॉफिट को हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉफिट कैसे, ये स्ट्रैटेजी से. क्रेडिट के डेबिट कैलेंडर एंड क्रेडिट कैलेंडर से वो प्रॉफिट हमारा कन्वर्ट होगा.
that future premium will be converted to profit if we form a debit calendar and credit calendar in call options. We can get that money. बढ़िया हो गया ना? That is a, you can say, this complete I have given, and now I have scheduled one program. ज्ञान के बारे में सीखेंगे next presentation में. Then now I have scheduled a webinar on 29th July to 13th August. ये प्रोग्राम होगा English and Hindi. Now I am speaking in both languages, so that time in English I will speak only in English. When Hindi I will speak only Hindi. So that having 12 sessions, that is I am going to explain all these strategies. Box spread, bull bear spread, all these spreads I am going to teach 12 spreads including Z score and vertical spread, horizontal spread, diagonal spread, VIX score. You have seen one small part of VIX, how to catch the consolidation, bull bear trend. Thoda in details you will understand. So this program is scheduled from 29th to 13th August. 12 session. एक महीना तक जो 12 स्ट्रेटजी सीखोगे उसी को मैं बताऊंगा. The learned concepts, whatever the strategy you are going to learn in this program, that I am going to give you a support for 1 month. So there you will be getting the information about the strategies, how to enter. That is second. Third, these strategies we are simulating or testing with this software. This I will show you how to simulate and test. So here this software also will give you for access for 3 months to take. Recording, PPT, everything is being given. So all things will be given. तो ये सॉफ्टवेयर कितना इजी कर देता है लाइफ को देखो. So suppose we have given January, I have shown you 2nd January till 31st January. ये निफ्टी के लिए बनाया गया है. सिर्फ 50 का लॉट डाल दो. So it should calculate your profit and loss. For that it is required 50. Quick any strategy बनाओ. Quick सारे month का बना सकते हो. Every month you can test. Only from 1 month, then clone it and test February. So now how I formed? Chosen the date, number of lots 50, load कर दिया data. सारे डाटा आ गया. This strategy we have formed. So this is what I have shown in the presentation. देखो तो ये प्रेजेंटेशन में वही दिखाया आपको. जनवरी में ये किया, यहाँ पे 18,800 लिया था, वहां पे 19,000 ले रहा हूं. You can take anything. Now you formed this strategy. Suppose you want to test how this same strategy worked in the year of 2023 February. Just select, hit on the clone button. No need to enter anything. Automatically it will search and find based on your depth what logic you have applied. From here you have take ATM, OTM, whatever depth you have defined. Based on the same depth, it will clone the strategy. For which month? For the February. देखो clone करके बता दिया. So these are the strike you have taken. Calculate the profit and loss. So you got the profit and loss. देखो profit and loss आ गया. So you got the profit and loss. Same way, if suppose I want to do for March 2022 December, 2022 December, clone this. 3 years you can clone. 3 years. Same strategy. क्या दिसंबर में ये काम किया था देखना है. So वो अपना सब बना दिया. You have to only hit here. See this, whether it has worked or not. So this tool is being given with this program for 3 months free to test the strategy. एक बार आप टेस्ट कर लेते हो क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है. Yes, it has worked, it has not worked, why it has worked, why it has not worked, सब समझ जाते हैं. So this you are going to get along with this program. तो इंटरेस्ट आपका, आप अगर चाहते हो तो ज्वाइन होके थोड़ा ज्यादा सीख सकते हो. So that is up to you. Now going to the next part of my presentation, Gann trend reversal date. Gann का trend reversal date कैसे निकाले. So those who are the member of the group, I have told you, Gann में trend reversal date निकालने के लिए pressure date, trend reversal date, trend change date, Gann date, बहुत सारा नाम है. Lot of names are there.
Gann date, Gann pressure date, Gann trend reversal date, Gann trend change date, trend alteration date. So Gann master date. Only one person has done a study on date analysis. So far, no study available other than the Gann to identify the trend reversal date. So here, those who are having our Gann WD Gann course, they will be knowing how many trend reversal date are there. 5 Gann trend reversal date, 4 to 5 methods we have given. And in that group, those who are member, I have given static trend reversal date. Gann ने ये बता दिया हर महीने में कौन से दिन में ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है. स्टैटिक, वो स्टैटिक है, दैट इज अ स्टैटिक ट्रेंड रिवर्सल डेट. वो बता दिए जनवरी में कब होगा, फरवरी में क्या होगा, मार्च में कब होगा. सो दीज आर द जनवरी कब, फरवरी कब, मार्च कब, अप्रैल में, जून, जुलाई. आज जुलाई से मैं बोले थे 7 to 10 इज ए ट्रेंड रिवर्सल डेट. टुडे इज 7th, आज हुआ. तो आप देखो दिसंबर तक देखो, फिर से नेक्स्ट ईयर देखो दिसंबर तक, तब जाके पढ़ो. हाँ, काम तो कर रहा है तो बड़ा पढ़ लेंगे. सो 2-3 साल देखो पहले, उसके बाद में जब टाइम मिले पढ़ो. तो बट पढ़ाई करना पड़ेगा. दैट इज ए वेरी गुड कैलकुलेशंस हैज टू बी डन. सो दोज आर स्टैटिक ट्रेंड रिवर्सल डेट. सो ज्ञान को थोड़ा एक संक्षिप्त में बता देता हूँ. दैट इज लिटिल बिट आई विल टॉक इन द 2 minutes आई विल टेक टू एक्सप्लेन व्हाट इज Gann study. Gann study is a study associated with numbers to be converted into degrees, angle. Why? Degree and time is having a direct relationship. 1 degree equal to 4 minutes. So degree and time is having a direct relationship. If we can convert a number to degree, then we can directly associate that number with time. So टाइम के साथ में नंबर का मेल बनाने के लिए हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो Gann स्टडी इज अबाउट दैट. हर स्टडी इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता. यू कैन डू इंट्राडे एनालिसिस देयर, you can do positional analysis there, you can do trend reversal date. Which date in a month there will be a trend reversal date. दिन में कब आएगा वो नहीं बता पाएंगे आप. दिन में 11 बजे 12 बजे वो ज्ञान के स्टडी में है ही नहीं. सो दैट इज नो स्टडी से दैट इन ए डे व्हेन द ट्रेंड चेंज इज गोइंग टू हैपन. दैट इज नॉट देयर. Which day of the month trend change is going to happen, that Gann has told. Then to convert this number to degree, there are 3 methods he has given. One with respect to square of 9 method, square. So square को देख के बना दिए. Square of 9 method, there is a formula to convert a number to degree. उसमें क्या किया जाता है, नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाता है, 180 उसमें मल्टीप्लाई किया जाता है. Then we have to subtract 225. 225 is the number of trading days in a year. अगर आपका 220 दिन है, 220 निकालो. If it is 210 days, you subtract 210. If you are doing in crypto 365 days, subtract 365 divided by 360. इसमें करके एक mod फंक्शन लगाया जाता है. mod, MOD, mod in Excel. So you will get the remainder of this equation. ये इक्वेशन का रिमाइंडर निकलेगा. वो रिमाइंडर्स को डिग्री माना जाता है. द रिमाइंडर ऑफ दिस इक्वेशन is known as the degree of that number, degree presentation of that number. So ये हो गया square. So like this, he has given one more formula for hexagon. If you are using Gann hexagon principle, regular hexagon, then another one more formula for converting number to degree. If you are using circle, Gann circle, then there is another formula for converting number to degree. 3 formulas for converting number to degree. And Gann study is a 4-dimensional study. आप जो चार्ट ग्राफ देख रहे हो वो कितने डायमेंशन का, 2 डायमेंशन. एक में प्राइस, एक में टाइम. One is price, another is time. So that is what you are seeing in the chart and graph. लाल पीले lines, very good candles.
क्लैपिंग देयर, फैंसी नेम्स, आइलैंड रिवर्सल हो गया, डोजी ऐसे पकड़ लिया, ऐसे हैंगिंग मैन ऐसे लटक रहा है, आप वो सब देख रहे हो। हैंगिंग मैन लटक रहा है, वो थोड़ी मंकी है लटकेगा। हैंगिंग मैन, हैमर, डोजी, उसी में आप लपटे रहे हो। बट द ग्राफ इज 2 डायमेंशन. 2 डायमेंशन is price and time. Gann is the first man who has told the manifestation of stock price is not dependent only on price and time. Price, time, velocity, and space. These are the 4 factors for your price movement. हो गया 4 डायमेंशन, प्राइस, टाइम, वेलोसिटी एंड स्पेस। आपका इंस्ट्रूमेंट अभी तक बना नहीं है ये चारों को दिखाने के लिए। देयर इज नो कंप्यूटर इज बीइंग मेड टू शो दिस थिंग्स। वो सिर्फ बताए नहीं, वो एक एम्ब्लम बनाए, एक डिवाइस, फिजिकल डिवाइस बनाए। वो फिजिकल डिवाइस में 4 डायमेंशन का ग्राफ देख के वो स्टडी किए। ही हैज स्टडीड दैट। प्राइस, टाइम तो समझ में आ गया। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट द वोलाटिलिटी एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। स्पेस क्या है? द ह्यूमन थॉट्स, इमोशंस जो ड्राइव करता है। हाउ नर्वस यू आर टेलिंग दैट ग्रीड एंड फियर ड्राइव्स द मार्केट, सो उसके लिए भी एक स्टडी है। हु विल स्टडी दैट? सो देयर ग्रीड एंड फियर एवरीथिंग आ गया। प्राइस, टाइम, वेलोसिटी एंड स्पेस are the 4 contributor of the price movement। कितना बड़ा सोच। अभी तक आपका 3D तक आप आए हो, 3D तक आए हो, 4D अभी तक पकड़ा नहीं। So mathematical, geometrical or on computer science you have come till 3D। 3D movies हुआ या आपका 3D drawings हुए, but you have never gone to 4D। 4D आप में गए नहीं अभी तक। ह्यूमन थॉट्स कैसे लाओगे? सो दैट ह्यूमन थॉट्स ही हैज पुट इट इनटू मैथमेटिकल वे। सो दैट्स व्हाई यू विल सी 251 डिग्रीज, यू विल सी समटाइम 360 डिग्रीज, क्योंकि उनका डायमेंशन है 360 डिग्री का, बड़ा डायमेंशन है। सो नंबर कैन बी कन्वर्टेड एनीथिंग टू 360 डिग्रीज। सो दैट इज व्हाट गैन स्टडी। तो जब इतना बड़ा स्टडी है तो उसको तो 1 घंटे में पढ़ नहीं सकते, आधा घंटे में पढ़ नहीं सकते, टाइम लगेगा। बट हाँ, काम करता है या नहीं ये जान सकते हैं। सो हियर स्टैटिक डेट जुलाई 7 से 10 तक के बीच में ट्रेंड चेंज होगा, उन्होंने बता दिया। अभी नहीं, दिस स्टॉक ही हैज नॉट डन टुडे, व्हेन ही हैज मेड दिस स्टॉक। किसी को पता है ज्ञान कब बोले थे इसको? 1940 में, 1940s में, जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। 30 साल पहले का। I born in 1975, he has spoken in 1930s or 40s में। मेरा पैदाइशी का 30 साल पहले बता दिए। वहां उस दिन होता क्या है? दिस 7 to 10, 21 to 23, 5 to 8, 7 to 14 होता क्या है? दिस आर द इंग्लिश कैलेंडर का डेट है। थोड़ा हिंदू कैलेंडर का डेट में देखो इसको, अगर जो लोगों का इंटरेस्ट है, those who are interested, see in these months, these dates of the month, what happens in our Hindu calendar. Does anything falls on that day? Does any Panchang related issues comes on that day? Have a introspection, you will understand। उसमें नहीं जाएंगे, वो डिबेट ज्यादा बड़ा है। हमें ये जानना है ट्रेंड चेंज कब होगा। आज तो हुआ, 7th बताए थे, अगस्त 5 तारीख को भी होगा, 5 से 8 के बीच में, 14 से 20 के बीच में, सितंबर में भी होगा, अक्टूबर में होगा, 10 साल तक होगा। वो 1940 से हो रहा है विदाउट फेल। सो नाउ ऑल्सो इट विल हैपन, नो डाउट अबाउट दैट। आप मानो न मानो वो आपके ऊपर है, बट इट इज हैपनिंग, इट विल हैपन। सो दैट इज व्हाट द गैन स्टैटिक स्टडी। ये हो गया स्टैटिक, सब ओवरऑल मार्केट के लिए, सबके लिए ये है। देन स्पेशल स्टडी आया। स्पेशल निफ्टी में कब होगा हम कैसे जानेंगे? ये तो स्टैटिक हुआ। निफ्टी में कब होगा, बैंक निफ्टी में कब होगा,
टाटा स्टील में कब होगा, इसके लिए क्या मेथड है? हाँ है। whether is there any method to stock specific study, that particular instrument specific study? yes, there is a method. उसके लिए एक नहीं 30-40 मेथड दिए हैं, 30-40 methods he has given. So far I understood only 5 to 7, not even 20% of that. And what I understood out of that one method I am going to tell. One is high angle low angle method. This method works perfectly. It has a great accuracy. अगर ट्रेंड चेंज डेट 10 दिन प्रेडिक्ट होता है, इसमें से 6 से 7 दिन काम कर ही लेता है. 6 to 7 days used to work. So वो मेथड में होता क्या है? फर्स्ट हमें क्या करना है, ये प्रेजेंटेशन बाद में आप देख लीजिएगा, आपके पास में है, दैट प्रेजेंटेशन ऑलरेडी यू हैव. सो नाउ आई विल गो हाउ दिस कैलकुलेशन हैपेंस. monthly high, monthly low, which date it has formed. Monthly high formed on 30th June, and that value was 19,206. Monthly low formed 18,464.55. That value was happened on 1st June 2023. This value happened. Now we'll take the difference of that, which is 736 price points. 736 price points. How many calendar days? 1st to 30th, 30 calendar days. In between 1st and 30th, 21st, 21 trading days. 21 trading day है. Saturday, Sunday, holiday सब चला गया. So all Saturday, Sunday, holidays excluding, we have 21 trading days, 30 calendar days. अगर इसमें क्रिप्टो में करते हो तो क्या होगा? कैलेंडर डेज भी 30, ट्रेडिंग डेज भी 30. लंदन में हो करते हो तो क्या होगा? इफ यू आर इन लंदन डूइंग इन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज वर्क, so you have to see in your London how many trading days was there, how many calendar days was there. So that is based on your London study you have to do. So formulas are same. So now what happens? After this we are converting the numbers to degrees. So this 736 need to be converted to degrees using the same statistical formula, same Gann formula. Square root of number into 180 minus 225 divided by 360. I'm using mod function of Excel. So by this process, all numbers whatever 736 is equal to 330 degrees. 30 number is 40.90 degrees. 21 is equal to 239.86 degrees. So all degrees we got. After that we have to get maximum degree and minimum degree. ये तीनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उतना ही हम लेना है. That is known as your high angle and low angle. So highest is high angle, lowest is low angle. उसके बाद में दूसरा फॉर्मूला आ गया. एक तो नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया डिग्री से, एक फॉर्मूला खत्म. दूसरा 30 डिग्री ट्रेंड लाइन, 40 डिग्री तो समझ में आता है, एक XY ग्राफ में 40 डिग्री खींच सकते हैं. वी कैन ड्रॉ 40 डिग्री ट्रेंड लाइन. 338 कैसे खींचोगे? आपके पास में वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये 4 डायमेंशनल ग्राफ है. सो इफ 40 डिग्री ट्रेंड लाइन में 30 तो एक नंबर हो गया, 30 is one of the number which is staying at a 40.9 or 41 degree trend line. What are the other numbers staying in the same degree trend line? कैसे जानोगे? उसके लिए ये फॉर्मूला 2 into n, n starts from 1 or 0 into 2 into a is nothing but angle divided by 365, 360 नहीं 365. Why 365? In a year how many days? Every day how much angle deviation? 2 into n plus 2 into a divided by 365 plus 1.25, 1.25 a constant. So power of 2. This 1.25 क्यों आया constant? बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे. Earlier sessions I used to say 1.25 कैसे आया? 1.25 is a unit degree of deviation in a single day. सोलर एंगल का 1.25 का डेविएशंस होता है हर दिन, इसीलिए. So this is a pure astronomical formula. ये फॉर्मूला बड़ा पावरफुल फॉर्मूला है. तो इसी से निकला
The number 30 also is in this line, trend line. So 12 also in this line. 29.96 यहाँ पे आ गया, 55.86, 89.73, ये सारे भी इसी लाइन का एक एक नंबर है. So only 30 is not there in that trend line. All others also there in the trend line. उसी तरह से हाई एंगल्स 338, यहाँ पे ए के जगह में ले लो 338. Take n as 1, n as 2, n as 3, like this way you find out these numbers. So numbers, so ये 30 कहाँ से निकला, 239, 339 कहाँ पे निकला था, 736. So smaller number 26, 50, 82, 123, all these numbers आ गए. After getting these numbers, इसको जिस दिन पिछले महीने लो बना था, जिस दिन पिछले महीने हाई बना था, 30th जून से, जून में ऐड करो, होल नंबर ऐड करोगे 12, 29, सो लाइक दिस वे होल नंबर, उसमें से डेसिमल को हटा दोगे. सो ऑल दिस सेम वे यू ऐड इट विद द लो फॉर्मेशन डे 1 जून से आगे चलो 12 दिन, 1 जून से 30 दिन आगे चलो, 1 जून से आप 86 डेज, 55 डेज आगे चलो. तो जो जो दिन निकलते हैं वो आपके ट्रेंड रिवर्सल डेट है. सो दीज आर द डेट यू फाउंड आउट. आउट ऑफ दैट जुलाई में सिर्फ गिर रहे हैं 3, 4 एंड 5. सो इसको नोट कर लो. सो 12th जुलाई, 26th जुलाई, 21st जुलाई एंड 29th जुलाई. 26 दो जगह में आ गया. सो 29 जुलाई इज योर ट्रेंड रिवर्सल डेट फॉर निफ्टी. अगर उस दिन हॉलीडे होता है, सैटरडे संडे आता है, तो अगले दिन, नहीं तो फ्राइडे, उसी दिन ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा. इफ दिस डेज फॉल्स ऑन ए हॉलीडे और ऑन सैटरडे एंड संडेज, देन द वर्किंग डे प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग विल वर्क एज ए ट्रेंड रिवर्सल डे. तो ये है ट्रेंड रिवर्सल डे निफ्टी का. देखो, ऑब्जर्व करो. आज तो एक दिन देख लिए, स्टैटिक डे, कैलकुलेशन नहीं, उन्होंने बता दिया, बहुत इजी है. ज्ञान हैज टोल्ड, वी हैव ओबेड. 7th जुलाई ट्रेंड रिवर्सल हुआ, ताली मारे, बहुत बढ़िया, बढ़िया लगा. सो दीज डेज ऑल्सो दे आर 12th जुलाई, 21st जुलाई, 26th जुलाई, 29th जुलाई. सो दिस ऑल्सो राइट एंड सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. इसका गणना कैसे करना है, 4 वैल्यू आपने लिए, प्राइस रेंज निकाल दिए, कैलेंडर डेज, ट्रेडिंग डेज निकाल दिए, उनको डिग्री में कन्वर्ट कर दिए. लो, जितने भी कन्वर्सन डिग्री है उसमें लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ले लिए, हाईएस्ट डिग्री एंड लोएस्ट डिग्री ले लिए. उसके बाद में नंबर्स इन द डिग्री, सेम डिग्री ट्रेंड लाइन स्टार्टिंग विथ n इक्वल टू 0 आपने शुरू किए. सो बाय दिस प्रोसेस वी फाउंड आउट ऑल दिस थिंग. सो इसी तरह से all these trend reversal dates are calculated. So those who are having our Gann सॉफ्टवेयर, वो क्या देखते हैं, काम कैसे करना है मैं बताऊंगा आपको, उसमें काम कैसे करना है. सो Gann का जो टाइम एनालिसिस सॉफ्टवेयर हमारा है, इसमें ये सारे कैलकुलेशन होके निकल आते हैं. सो ऑल दिस कैलकुलेशंस यूज्ड टू हैपन एंड कम इन दिस सॉफ्टवेयर. यू नीड नॉट हैव टू कैलकुलेट, बट कैलकुलेशन सीखना सही है. ऑलवेज आई यूज्ड टू टेल, even though if you are using the software, try to learn the calculations, because जब आप calculation सीख जाओगे तो कि दूसरा मजा आएगा. तो so you will get another satisfaction level. Your knowledge also should grow. So डिसीजन के साथ में नॉलेज भी ग्रो होना चाहिए. थोड़ा मैथमेटिक्स ज्यादा पढ़ोगे तो अल्जीमर डिजीज नहीं होगा. सो इफ यू डू लॉट ऑफ मैथमेटिक्स, your memory will be sharp, you will never get Alzheimer's disease. So जो बुढ़ापा में स्मरण शक्ति खराब हो जाता है वो होगा नहीं. तो देखो, ये आ गया सारे चीज. इसमें थोड़ा रिफाइन होता है. some things we used to take art, squaring we used to put, slight differences आते हैं. so high angle, low angle, static angle, Gann angle, high low square, hexagon, price time, price range, summary आ गया. कितने ट्रेंड रिवर्सल डेट उसमें हम दे दिए यहाँ पे. This is a major trend change date. New high can form, new low can form, trend reversal can happen. So if you go for the Gann angle, this is a minor trend change, small price correction, consolidation can happen in these days. So ये हो गया. So these are the high low square. Here also we are saying
major trends. Hexagon, here also we are saying what is the, so hexagon में देखो 8-9 तारीख छुट्टी है, तो 7th आज ट्रेंड रिवर्सल हो गया, वन डे पहले यही ट्रेंड रिवर्सल कल भी मंडे को भी चलेगा, 10 तारीख भी ट्रेंड रिवर्सल है इन हेक्सागन मेथड. सो इट इज ऑल्सो कोइंसाइडिंग विथ दिस थिंग. सो 8-9 दोनों कैलकुलेशन में निकला, उस दिन हॉलीडे है तो 7 तारीख को हो गया, बट 10 तारीख भी कैलकुलेशन है. So here that also you have to see. So these are the methods it is programmed here. And इसमें जो क्या होता है ट्रेंड रिवर्सल स्कैनर भी देते हैं. So we have given a scanner also here. कल कौन से स्टॉक का ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है पूरा लिस्ट निकल आएगा. So which are the stocks having the trend reversal date tomorrow? You will get it in the scanner. So scanner will scan all the stocks and give you which are the stocks are having trend reversal date tomorrow. इनका हो गया, देखो ये सारे चीज का the trading today closing happening 4411 above, then uptrend level 1, 40% से 60% chance is there it will accept the trend reversal date. If it is happening above level 2, 65% से ज्यादा chances है ये trend reversal date को respect करेगा. It will respect the trend reversal date if the price is closing above uptrend level 2, means down move होने का chances 65% है. If the down it is there in the downtrend level 2, then up move will happen on Monday, the chance is 65%. So here all this major trend reversal date we have given, price time, price range, every method we have given in detail. Scanner आ गया, scanner से पता चल जाएगा कि कौन से स्टॉक में आपका ट्रेंड रिवर्सल्स आर देयर. सो कैसे काम पे लगाना है, हाउ टू वर्क, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हाँ आपने ज्ञान तो बताए थे 7 तारीख को ट्रेंड रिवर्सल होगा, हमें क्या फायदा मिला. सो व्हाट वी शुड डू, हमें क्या करना चाहिए. 6th market is plus 100 points, so I should expect 7th there will be a correction, so I should sell Nifty future and hedge it with the call option, and this trend reversal date is respected, we should follow that. So वो हुआ. What if tomorrow is a trend reversal date, today we should initiate contra trades along with hedging, not like simply by opening just sell kar do bhul jao, not like that. You have to contra trades, you have to initiate along with hedging. That is how it should benefit you. So now Nifty is coming as a trend reversal date, आज coming on 12th. So wait करो 11 में क्या होता है, 11th of July, what is happening. 11th of July 3:30 you will be knowing that whether it is trending positive closing or negative closing. So contra trade, if it is positive closing you should expect 12th it should be a negative opening or negative closing. So today 11th around 3:30 you have to sell and hedge. So ट्रेंड रिवर्सल एक्शंस हो गया ओपनिंग में या क्लोजिंग में, बुक करके आ जाओ. सो दैट इज हाउ यू शुड एक्ट ऑन दिस मेथड्स. यहाँ ट्रेंड रिवर्सल डेट से ये पता चलता है. पहला ये हो गया ट्रेड का. दूसरा क्या फायदा है, व्हाट इज द सेकंड बेनिफिट, इफ यू हैव एनी पोजीशन हेज इट, बुक द प्रॉफिट. सो दैट काइंड ऑफ थिंग आल्सो इट कैन हेल्प यू. सो ट्रेंड रिवर्सल डेट जो होता है वो परमानेंट नहीं होते हैं, हो गया तो चलेगा 1 साल तक, वैसा नहीं है, उसी दिन का इम्पैक्ट है. सो ऑन दैट डे दैट इम्पैक्ट विल हैपन. तो वो होता क्यों है, वो क्वेश्चन तो आता है. ये 12 तारीख में होता क्या है, व्हाई दिस 12 इज सो इम्पोर्टेंट. सो इट इज ए 4 डायमेंशनल थिंग. व्हाट आई सेड टू यू बिफोर, 4 डायमेंशनल थिंग. आप अगर ये सोचते हो कि आपका थॉट को सिर्फ एंड सिर्फ आप ही गवर्न करते हो, you are absolutely wrong. If you think your thought is being governed by you and you alone, it is absolutely wrong. Nature has a great role in your thought process. Nature, so nature का ये इतने बड़े बड़े
जो if there is a tide in sea, there is a tide in your rivers, सी में टाइड आता है, रिवर में टाइड आता है, कैसे आते हैं? तो कुछ ऐसे अलाइनमेंट्स हो गया, लूनार अलाइनमेंट हो गया, सोलर अलाइनमेंट हो गया, टाइड आ गया, इतने बड़ा पानी का एक स्रोत को वो घिस देता है. Such a huge mass of water is to be pulled forward, so that why it comes some few meters from the source. Once that effect gone, it goes back. अगर इतना बड़ा समुंदर को घिसने का कैपेसिटी इट इज मून इज हैविंग, तो आप तो चीटी भी नहीं हो उसके सामने में. यू आर नॉट इवन आंट इन फ्रंट ऑफ दैट. सो आप कैसे नहीं खींचोगे? सो यू विल ऑल्सो बी पुल्ड आउट फॉर दैट. सो हियर योर बॉडी में, आपके बॉडी में कितने परसेंट पानी है? आप में से बहुत लोग, डॉक्टर लोग इसमें बैठे होंगे. हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ योर बॉडी इज फुल ऑफ वाटर? 72% आपका वाटर ही है आपके बॉडी में, पानी. समुंदर को खींच दिया, आपको नहीं खींचेगा. क्यों? आप शिव जी का भक्त हो, आपको खींचेगा नहीं. मून इज हैविंग द कैपेसिटी टू पुल द entire ocean to few meters for temporarily, not permanently, temporarily for few hours, few hours it can pull. Then it will again go back to its normal size. And your body is having 72% water and you will not be pulled. ये तो बात नहीं हुआ. Okay, so that is for that reason only you will also be pulled. So that there the role of 4 dimension: price, time, velocity and space comes to action. So these are the days. Gann pressure days or the Gann trend change date are the days which will have a impact on your demand supply situation. Contract situations will happen. So mathematically studied through angular movements. That is what your high angle, low angle method. Similar way you have other methods also. So in Gann course I have explained the entire thing. What are the things near to 40 hours? I have explained various concepts. Those who have joined the program also, they learned many things. Many of you have joined and learned that program. So that is also there. So now we have given also some offers long back we have given. I have extended that. If you want Gann software, one standard deviation price analysis software, Gann course together, you are getting a great discount. Many have purchased last month, 50-60 people. If you are interested, you can go for that. I have extended that thing for all of you. Link is given, you can go for that. Options में काम करके पैसा कमाना चाहते हो, with lot these things, lot of scientific validations and with testings. ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी ऐसे काम कर गया. With testing, mathematical testing, volatile VIX was this, we got this. So these are the things are there. If you want, you can enroll for that program. That registration is going on. I think 40-45 people already joined in that. So that is you are going to. So इसमें से क्या आता है? ये conclusions निकलता है. Only through scientific mean and correct study you can make money in the market. Otherwise not. Otherwise not. Scientific स्टडी ऐसा करो जो मार्केट माने. स्टडी ये मत करो जो आप मानते हो. स्टडी ऐसा करो जो मार्केट जिसको रेस्पेक्ट दे. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. No, it is not a Mac based system. It will not work, Rajesh ji. All softwares calendar combination with a spread of 65, 60 to 65 काम करेगा, पैसा कमाओ. एक लॉट में 3-3 हजार निकल आता है. कितना इन्वेस्टमेंट? 60,000 का. 60,000 का इन्वेस्टमेंट में एक महीने में एक ट्रेड में 5% तो निकल आया. सो 3,000 2,000 निकल आया. 2% भी निकला भी बड़ा है. 1200-1500 निकल गया भी, वो भी बड़ा है. वो भी 24-25% कमा देता है तो लॉजिक इसमें. सो इट हैज ए लॉजिक. इतना पैसा कमाओगे तो थोड़ा सा तो काम करना पड़ेगा. सो लिटिल बिट यू हैव टू वर्क. सो लॉजिक इज देयर. को लेके
कैसे जाने कि कब कितने पॉइंट के बाद में आपका कंसोलिडेशन होगा, ये संतोष जी पूछ रहे हैं. सो संतोष जी इज आस्किंग, using the his VIX, how many point above or below will know that that is a consolidation or a correction is going to happen. So what I am going to do, month's first date, month first date, what is the VIX? VIX में 100 multiplied है, इसलिए मैं 100 में divide कर रहा हूँ. So I am bringing it to the absolute number terms, not in percentage term. Then I am finding out the daily VIX. It is in the first trading day of the month, closing. First closing day of the month, first trading closing day of the month. What is the VIX? I am taking that VIX, finding out daily VIX, VIX divided by square root of 365. Then I am finding out the monthly VIX, daily VIX multiplied with square root of 30. एक महीने का VIX मेरा निकल गया. This VIX I am multiplying with the closing first day closing price of the Nifty spot, not future. So I am getting one number 618. So this many points of movement I will have in a month. एक महीने में 618 पॉइंट का मूवमेंट होगा. ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है. इट कैन गो डाउन, इट कैन कम अप ऑल्सो. So in this I am using a Fibonacci ratio 0.618. 0.618 एक बड़ा रेशियो होता है. That is a very strong ratio. Multiplied with that, so I am getting 380. So ये बेस पॉइंट से 380 पॉइंट ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन होगा. फ्रॉम हियर 380 पॉइंट गिरने के बाद कंसोलिडेशन होगा, नहीं तो फर्दर डाउन ट्रेंड चलेगा. That is what I want. After 382 point of the climbing, consolidation will start and वो बाकी का और 100-200 पॉइंट वो ऊपर खींचेगा. सो 618 उसको मिलना है. सो 382 पॉइंट्स आफ्टर प्लस it will consolidate. 382 point minus it will consolidate or downtrend will start. So मुझे यही पॉइंट में एंट्री करना है. When it is plus 380 points moved from 18,147, I will form a debit calendar and a credit calendar. कंसोलिडेशन हुआ, प्रॉफिट मिलेगा 2-3 दिन में, नहीं तो वहीं से करेक्शन हो गया, प्रॉफिट मिलेगा. इफ देयर इज ए कंसोलिडेशन और करेक्शन, आई एम गोइंग टू गेट द प्रॉफिट. So I will wait for 382 point of move happen in either direction to initiate this strategy. अगर ये करते हो, if you do that, what happens? ये जो कुछ महीने में प्रॉफिट आया, कुछ महीने में नहीं आया, so whatever happened here, you have seen from the January to June, few months you get profit, few months you did not get profit, all months you will get profit. वही तो चाहते हो आप. You need not have to initiate it and sit till the end of the month. What you can do, using VIX, calculate how many price point you are expected to move in this month. This month 618 आपने देखे, 618 was calculated, 620 point we moved. It won't move more than that. So in that 0.3618 times you take, after 0.618, 382 point of movement, there will be a correction, short-term correction or consolidation, or after that 382 point of correction, there will be a further corrections or consolidation. So this is the probability. So उसी time पे, on that time itself you have to initiate this. So if you initiate this, what happens? Your calendar spread also protected and you will also make money. So now Nifty is at 150 point premium. I am suggesting 100 to 150 point premium. So I am suggesting go with the call option in this style. If Nifty goes to 100 point discount or 75 point discount, what you should do? प्रीमियम तो आप बताए थे, अभी डिस्काउंट हो गया तो वो स्टडी हम भूल गए. If instead of premium it is going to discount, what you have to do? Same strategy you have to do in put options. Same strategy you have to do in the put option. इसमें daily
what I has told, you have initiated on second, see every day basis what is the profit it has given, final day is this, not that every day कल 3 तारीख को जनरेट करो तो 4 तारीख को निकला, 4 में जनरेट करो 5 में निकला, ऐसे तो मैं बताया नहीं आपको. By seeing this thing, never estimate that no, second it is initiated, third gone profit, fourth initiated, fifth, इसी में से 1 महीने में करोड़पति, 2 महीने में अंबानी, 6 महीने में हो गया पूरा बृहस्पति. ऐसे नहीं होगा. Initiated on 2nd January, its profit and loss estimations till 24th, what happened on daily basis, initiated in one day on 2nd January. So that 24th तक कैसे चला. Initiated on the same first day of the February. Initiated on first day of the February. So what happened? What happened first day of February till February end तक कैसे रहा? So इसमें कुछ दिन losses, some days we saw losses, some days we saw profit. How to avoid these losses? These losses we don't want to see. So we have to enter at a proper time. एक सही समय में हमें एंटर करना है. हाँ, 12 बजे लंच खाना है, खा लिए, बहुत मजा आया. कोई सुबह 7 बजे लंच के लिए बुलाता है, रात के 12 बजे आपको बुलाता है लंच के लिए, डिनर के लिए या ब्रेकफास्ट के लिए, थोड़ी जाओगे आप. सभी का एक समय होता है ना, सभी का समय होता है या नहीं. वही प्रिंसिपल यहाँ पे है. जब उसका सही समय आया उसी में ये करो तो ये नेगेटिव देखोगे ही नहीं. फंक्शन, this will convert the number to degrees. Mod of square root of n into 225 minus 180 divided by 365. Sorry, 360, not 365, 360. 360. So that will convert a number to degrees. Anybody not joined in the group, you just message me 99411 05705. 05705. So I'll send you the link. You can add yourself in that group. So that is a free group we run there. Lot of Gann stops I used to speak. So that is what, this is the truth. 9 से 10 से 9 लोग पैसा नहीं कमाते हैं, वो लिखा रहे हैं यहाँ. तो वो इंस्ट्रूमेंट को तो बंद कर देना चाहिए. अगर ऐसे हो रहा है तो क्यों डिस्क्लेमर लिख दो, दारू पीना खराब है तो दारू बेचते रहो, सिगरेट पीना खराब है सिगरेट बेचते रहो. डिस्क्लेमर आ गया. रिस्क डिस्क्लोजर ऑन डेरिवेटिव, इसमें से लॉस होता है, किसी को पैसा नहीं बनाता है. तो एक आदमी तो यहाँ पे बना रहा है, दैट वन पर्सन. हु इज दैट पर्सन? व्हाई ही मेक्स, व्हाई नॉट 9? ये तो बात आता है, आप रीड करके एक्सेप्ट कर देते हो. सो हियर बात ये आ जाता है, why that one man earns, why not us? क्योंकि वो एजुकेटेड है, वो स्टडी किया है, वो अपना अध्ययन किया है, हाउ टू हैंडल this risky instrument. Fail mark in a school where your child is studying. Whom you should blame? You should blame the teacher or you should blame the child? Teacher should be blamed. because वो ऐसे पढ़ाता है कि सब फेल, मीन्स कुछ पढ़ाता ही नहीं है. You have a educational program, investor educational fund, you conduct fancy programs with no substance, then how the people will get educated? That is one part. Second part, for traders, those who are coming there, zero skill in derivative. They came in Nifty trading, option trading, this trading, that trading. So किसी को ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं है, वो 300 रुपए में खरीद के 290 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के टारगेट रख देता है 315. वो थोड़ी मेथड हुआ. Why he is fixing 315, why he is fixing 290, nothing he knows. It is a hedging instrument. Is it, first of all, option is not a trading instrument, it is a hedging instrument. वो समझते नहीं हो. How to control that risk, that also we are not able to make it. All this, what is the process of entering the strategies or hedge it properly, that also we are not understanding. तो पैसा कैसे बनेगा? So now तो फेल होंगे ही होंगे ही नहीं. What disclosures you are seeing now? Many people knew me from the year 2005.
and many of you have seen my YouTube channel. From 2005 to till date, all my videos, again I repeat, always I repeat, hedge your trade. From 2005 to till 2023, always I used to say, if you are asking someone how many percent is your call is success, that is success, that is success, then you are a fool. You must ask which method you are using. Can I able to understand that method, read and understand that method? If your analysis is happening on Gann, is it possible for me to understand and calculate that analysis or do that analysis of my own? If this calendar spread I am forming, why I am forming this? What is the logic behind this? So ये सब पूछना चाहिए, इसमें आपको अध्ययन होना चाहिए. सिर्फ बोलते हो कितना परसेंट सक्सेस, कितना परसेंट सक्सेस, कितना परसेंट का प्रॉफिट बनेगा, वो थोड़ी बोलेगा कि 0% बनेगा आपको लॉस हो जाएगा. So that